Hi guys, welcome to OAS Hub. केमती अच्छा आपण मैंने सो वीकली करंट अफेयर्स जोटा कि 20 to 26 अक्टोबर ये सेक्शन टाक आम आज स्टार्ट कर एवरी वीक आप पाइबे सो पूरा वीक रे बेसिकली 20 to 26 ये डेट भितर आप जहाँ थे ये करंट अफेयर्स पाइबे ये एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा लास्ट को एमसीक्यू डिस्कसन करवा मेन्स ओरिएंटेड डिस्कसन करिया तो समस्त को ये हेल्पफुल हम सो डू जॉइन एवरीडे सो सब्सक्राइब करंतु आपण चैनल को आपनकर ओएस ऑफ चैनल को समस्त सब्सक्राइब करंतु सांग साथी सहित शेयर करंतु सो आमे जे देखियो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज ये न्यूज रे काहे अछि ना इंडियन ओरिजिन हिस्ट्रियन सुनील अमृत विन्स ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज रिसेंटली तो से ये न्यूज रे अच्छी इंडियन ओरिजिन सुनील अमृत इट इज ए प्रेस्टिजियस अवार्ड जोटा कि सेलिब्रेट करे वर्ल्ड बेस्ट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन रे बेस्ट वर्क्स माना जाए यहाँ को 2013 रे को एस्टाब्लिश होता पर्पज है टू रिवार्ड राइटिंग grounded in exceptional research in the fields of humanities and social science. So administer किए करुच्ची ब्रिटिश एकेडमी जोटा कि यूके रो नेशनल एकेडमी फॉर ह्यूमन्स एंड सोशल साइंसेस सो ये एडमिनिस्टर सो एलिजिबिलिटी किए ना बुक्स गोटे होइथो जेटा कि नॉन फिक्शन होइथो वर्क्स ऑफ ए नॉन फिक्शन एवं इन यूके एंड ऑथर्स एनी नेशनलिटी ही पारे से इंडियन ओरिजिन सी पाइले बेस्ड ऑन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड वर्किंग इन ए लैंग्वेज प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेटेड वर्क इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके सो प्राइज अमाउंट 25,000 पाउंड कन्वर्ट कर दियो पाउंड को रुपीस केते होबो जानि जिवो इंडियन स्कूप्स वूल ये तुमरो एनवायरनमेंट पार्ट रे तुम पाई परिबो इंडिया रो स्कूप्स वूल सो एटा देखाई जी कि नियर कर्नाटक रे एटा देखाई छी दारोजी सेंचुरी फर्स्ट recorded sighting the species in this region so it is a nocturnal bird known for its distinct ear-like tufts and exceptional camouflage so it is a small sized wool species that blends effortlessly into its surrounding okay wool space छोटिया देखा बड़ फोटो अच्छी सो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इंडिया रे पाइबो पूरा श्रीलंका रे पाइबो नेपाल बांग्लादेश पार्ट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया रे पाइबो सो मन रखिबो दारोजी सेंचुरी एटा इंपोर्टेंट प्रिलिम्स पाई एवं ए रीजन आगु मिलथिला नॉक्चर्नल बर्ड जोंडे कि तागर ईयर जानिच नॉर्मली वूल माने नॉक्चर्नल मोस्टली थांती हैबिटेट प्रिफर ओपन वुडलैंड्स गार्डन्स अर्बन एरियाज ग्रुप्स and often near human habitation पाखापाखि ये रुहे कंजर्वेशन स्टेटस कौन IUCN रेड लिस्ट कंसर्न and threat है habitat loss and pesticide यूज पाई ये लॉस देखा देन कर्नाटक दारोजी सेंचुरी पर देखिबा बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक रे पाइबो ये नियर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी पाखरे फर्स्ट सेंचुरी इन इंडिया एंड एशिया जे कि एक्सक्लूसिवली कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ स्लोथ बियर पई एटा यूज करातला ये यूनिक स्क्रब फॉरेस्ट अच्छी जोंडे कि विथ ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन बोल्डर्स हिलोक्स caves and rocky outcrops which are ideal for sloth bears so the PMC scheme this is very important ये मेन्स दो भी इंपोर्टेंट दवा को जाऊँ जो मैंने केरला लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैज एक्यूज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्सेप्टिंग इम्प्लीमेंट द PMC स्कीम तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी थिला से PMC स्कीम कौन कहूँ ना PMC स्कूल कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम
सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रे सेंटर और स्टेट रो शेयर थाए सेंट्रल सेक्टर स्कीम रे ओनली सेंटर थाए एम कौन टू स्ट्रेंथन सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड जॉयफुल स्कूल एनवायरनमेंट लॉन्च इन 2022 लॉन्च होता नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ड्यूरेशन वाला पीरियड 5 years फ्रॉम ईयर्स ऑफ 2022-23 टू 2024-27 इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किए ना केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस नवोदय विद्यालय समिति एंड स्टेट एंड यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट यार माने ऑब्जेक्टिव कौन टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक एजुकेशन एनविसेज्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पॉलिसी अनुसार ये पॉलिसी कराई सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल को स्ट्रेंथन करा जीवो क्वालिटी एजुकेशन देगी से इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड जॉयफुल एनवायरनमेंट को करा जीवो 2022 रे लॉन्च होई सो या पर न्यूज अछि देन रेड फ्लैगिंग ऑफ वेस्टर्न घाट बाय IUCN रेड फ्लैगिंग ऑफ वेस्टर्न घाट बाय IUCN ये काई के न्यूज रे अछि द वेस्टर्न घाट्स एंड 2 national park in India have been categorized as the being the significant concern in the IUCN list of natural world heritage site across Asia. वेस्टर्न घाट को रेड फ्लैगिंग कही कि IUCN सो वेस्टर्न घाट एंजल दीटा नेशनल पार्क को IUCN बेसिकली कैटेगराइज कराई कौन ना सिग्निफिकेंट कंसर्न आसाम मानस नेशनल पार्क दीटा नेशनल पार्क जो कौन ना मानस एंड वेस्ट बेंगल सुंदरबन नेशनल पार्क या को भी सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी रखा है वेस्टर्न घाट तो अच्छी एंड मानस एंड कौन सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट अनुसार देखिए वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट द आउटलुक इज ए ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नेचुरल एंड मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट this edition covers 271 sites. The 4th edition launched in IUCN World Conservation Congress 2025 Abu Dhabi. Released by IUCN. The complement the official monitoring under the World Heritage Covenant, providing deeper analysis on the threat, protection, management status, and trends. The report categorizes the natural site as a good and good with some concern, significant concern and critical. ये categorize कराई report कोना natural site को कराई good, गोटेला good with some concern, गोटेला significant concern, गोटेला critical. So एठी जे देखाबो एटा को significant concern category रखाई IUCN एटा को करे Extreme Poverty Eradication Project EPEP. Chief Minister of Kerala ये ऑफिशियल डिक्लेयर कले कौन ना केरला इज फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन November 1, 2025 नवेम्बर 1 को ये ऑफिशियली पॉवर्टी फ्री है एक्सट्रीम पॉवर्टी सो EPEP ऑल्सो नोन एज अति दरिद्र निर्मार जन प्रोजेक्ट that is launched in 2021 by Kerala. So basically extreme poverty जो माने अछंती ताकू सेटू हटेया पई extreme poverty. I am going to identify those suffering from extreme poverty who are currently outside the support system and support them to come out of the experience of the extreme poverty within 5 years. Clear? So नीति आयोग 2021 रा स्टडी कला कि केरला इज द स्टेट with lowest poverty rate in the country with a poverty rate of 0.7% of the total population. इधर चारटा इंडिकेटर गोटेला फूड हेल्थ इनकम एंड हाउसिंग ये चारटा इंडिकेटर रखाई जी
So the extreme poverty eradication project जोन 2021 Kerala government prepare micro plans for every family. 1 lakh individual basically from 64,000 family identified as extreme poor. So ये सब identify कराई छी. Processor शक्ति ये न्यूज रे कहीं अच्छी ना इंडिया फर्स्ट 7 nanometer computer chip designed to be ready by 2028 announced by Union Minister Osssc first 7 nanometer computer chip in the first indigenously designed 7 nanometer 7 nm computer processor is expected to be ready by 2028. Started in 2013, Shakti is based on the open source instruction set architecture, allowing anyone to adopt and use it freely without restriction. Okay, so ये तुम्हारा 2013 स्टार्ट होइथिला या भाई एवं प्रोसेसर शक्ति नानोमीटर 7 नानोमीटर कंप्यूटर प्रोसेसर छोटा छोटा ये प्रोसेसर डेवलप्ड बाय किए ना राइज रिकॉग्नाइज्ड इंटेलिजेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रुप एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास through its Shakti initiative. Shakti initiative is a key program to develop indigenous. Shakti initiative is a key program to develop indigenous open source microprocessor. Example development of Shakti processor family. Nodal Ministry of Electronics and Information Technology MIT. Collaborate MIT nodal ministry अछि. Indigenous and open source microprocessor so development of Shakti processor family को so it foster collaboration among the academic institution, startup and industry to enhance R&D infrastructure and expand talent capacity. Then Great Green Wall GGW of Andhra Pradesh. This is also very important. Andhra Pradesh state government develop करिया चाहूँगी ना Great Green Wall GGW along its coastline to mitigate the impact of natural phenomena. It is a ecological project. It is a ecological project with a front row of wind and salt tolerant tree to create 5 km wide living ecological shield along its 1053 km coastline by 2023. So it is बहुत important. गोटे इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट जोटे कौन होची विंड एंड सॉल्ट टॉलरेंट ट्री को बिल्ड करा जीवो बना जीवो 5 किलोमीटर वाइड रे माने माटी आडकू एंड लिविंग इकोलॉजिकल शील्ड भलिया काम करिवो अलोंग इट्स 1053 किलोमीटर कोस्ट लाइन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूज. ग्रेट ग्रीन वॉल तमाने कौन देख यहाँ है धर कूल समुद्र कूल यहाँ है पानी पानी एठू 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये धर 0 ରୁ 5 किलोमीटर एति पर्यंत लगा जीवो एवं ये जो कोस्ट रो डिस्टेंस है 1053 किलोमीटर टोटल 5 किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस रो ये हम 2030 सुधा कंप्लीट. सो आंध्र प्रदेश इज कंसीडर्ड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल स्टेट which more than 3.3 million people living within the 5 kilometer coast facing frequent cyclone flood and rising sea level. So coast community को protect करिवा ecosystem को protect करिवा environment threat रू खास करके cyclone flood and erosion रू 32% of the Andhra Pradesh coastline to be actively eroding and shoreline for the Krishna and Godavari estuary critically vulnerable. So ये vulnerable condition ना पाइबो. So Andhra Pradesh assessed the fourth most affected state in India in the coastline erosion rate, inspired from GGW, drawing its inspiration from similar global and domestic projects like Africa Great Green Wall
and the Aravali green wall project. So seithru a develop heichi. Then monoclonal antibody against malaria. Monoclonal antibody against malaria. So the new monoclonal antibody named MAM01 developed by University of Maryland School of Medicine has shown complete protection against malaria infection in a clinical trial. Okay, monoclonal antibody, falciparum sporozoid, about monoclonal antibody, laboratory engineered protein that mimic the immune system ability to fight pathogens such as virus, bacteria or parasite. So it can be specifically designed to target certain antigens, provide instant immunity, unlike vaccine that need multiple doses, and can last for several months with a single injection. So ये antibody immune system रो fight करिया पई virus, bacteria and parasite को help करियो. So basically instant immunity booster भले ये काम करियो. Working mechanism कौन? Now it binds to a conserved region of the Plasmodium falciparum, जोंटे की circumsporozoid protein CSP, neutralizing the parasite at the sporozoid stage and blocking its entry into liver cell before it can infect the bloodstream. About malaria. Malaria विषय सब जानी जो Plasmodium parasite ये transmitted हुए through a female Anopheles mosquito. बहुत सारा 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट अच्छी गोटेला दीटा बहुत इंपोर्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये ग्रेटेस्ट थ्रेट थाए बाकी अदर मलेरिया अच्छी जोंटे कि इन्फेक्ट करि पारंती बट प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेस्की सो ये बेसिक किसी इंपैक्ट करेनी ओवर द 6 लाख डेथ एनुअली मोस्टली इन सब सहारन अफ्रीका 6 लाख डेथ malaria jugu. India among the 11th high burden country world malaria report 2023. India targets zero malaria by 2023 under the national framework for malaria elimination in 2016 ରୁ 30. So 30 सुधा हमें zero malaria करियर टारगेट देइछु. Light pollution. Light polluted by the sky, visible night sky. Why news? India rapid urban expansion. India rapid urban expansion जे देखिबा 24/7 illumination model have ignored the health and ecological cost of the light. Health and ecological cost of the light को ये ignore करछि. Economic cost of light pollution, which is the excessive or misdirected artificial lighting that disrupt natural darkness and circadian balance. Causes of light pollution. Causes of unregulated urban lighting. India lacks BIS norm. For outdoor light levels, which leads to overuse of light intensity. LEDs in street, billboards and buildings without illuminance standards. Okay, architectural illumination, excessive facade monuments lighting for the tourism and smart city beautification drives करे. So ये light pollution होबार गोटे unregulated urban lighting norm अनुसार करा जाऊ नहीं. Architectural illumination, Kolkata illumination project uses 450 lights per building. So ये beautification drive पे. Policy blind spot,
Light pollution is absent from the Environmental Protection Act 1986. Low awareness. 57% of Indians have never heard of light pollution. Okay. So dark sky initiative against the light pollution. India's first dark sky reserve, Henle, Ladakh, 2022. India's first dark sky park, Pench Tiger Reserve, Maharashtra. International Dark Sky Association, global body for promoting responsible outdoor lighting and protection of natural lights, night sky. It has its headquarters in Tucson, Arizona, USA. Declining spotted deer in Konark, Balukhand Wildlife Sanctuary. So, this is very important. So, Balukhand Wildlife Sanctuary Odisha re मिली कौन ना डिक्लाइन होती हैबिटेट ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग भी अच्छी डिग्रेडेशन होती पॉपुलेशन डियर स्पॉटेड डियर सो सेंसस अनुसार 2016 सेंसस होता से 4315 चीताल थे ए डिक्रीज फ्रॉम 5200 इन 2012-13 So declining कौन ना vehicle collision along the Puri Konark Marine Drive, illegal hunting, habitat degradation, drying water bodies. Cyclone Fani 2019 further worsened the ecological balance. About spotted deer. Spotted deer or axis was known as chital in a medium sized deer species native to the Indian subcontinent and Sri Lanka. Reddish brown coat cover भलिया थाए white spot थाए. Habitat prefer chital prefer dense deciduous forest, semi evergreen forest ये सब थाए. Konark Balukhand Wildlife Sanctuary is a man made forest on the coastal strip between Puri and Konark जोंडे कि आपण सब सी बीच देखियो जानती कोणार्क और पुरी. Vegetation, it mainly consists of casuarine plantation, cashew trees, acacia, etc. patches थाए. Wildlife species include chital, striped hyena, jackals, jungle cat, mangoes, fishing cat, pangolins, etc. Porcupine ये सब मिले. Black buck have disappeared since 2012. So migratory birds किछि थांती along the Bay of Bengal coastal flyway. Host migratory birds such as whistling duck, black-tailed godwits, and brown-headed gulls. Marine habitat. The sanctuary coastline serves as a nesting or arivada site of olive ridley turtles. Global forest resource assessment. ये environment रहा जी बहुत सारे questions अच्छी ये week रे environment related बहुत questions अच्छी. Food and Agriculture Organization FAO has published Global Forest Resource Assessment. देखो इटा very FAO रो इटा ये ग्लोबल फॉरेस्ट कवर एंड मैनेजमेंट ट्रेंड्स को कथा कोए GFRA ये FAO रो फ्लैगशिप रिपोर्ट पब्लिश एवरी 5 ईयर 5 वर्ष को थरे हुए एवरी 5 इयर्स रे providing comprehensive data on forest extent, condition, management and use worldwide. So यार important forest cover दे देखिए world total forest area stand at 4.1 per billion hectare, around 32% of the earth's landscape. आमे 33% target अच्छी. Forest concentration 54% global forest are concentration in the 5 countries Russia, Brazil, Canada, USA and China. Forest loss. The annual rate of net forest loss decreased significantly from 10.7 million hectare in the 90 to 4.12 million. Regional trend. Asia is the only region to record a net increase in the forest area. India's position. India has risen 9th place globally in the total forest area from 10th in 2020 and maintained 3rd position in the annual forest area gain. Protection and management. About 20% of global forests are now legally designated as protected area and 50% of managed area are long-term conservation plan. Okay, large number of Maoists जोंटे कि मास सरेंडर कले इन बस्तर 210
बस्तर 210 माओइस्ट सरेंडर कले छत्तीसगढ़ बस्तर, मार्किंग द लार्जेस्ट मास सरेंडर इन इंडिया काउंटर इंसर्जेंसी हिस्ट्री. Symbolic gesture, each cadre was given a red rose and a copy of the constitution, symbolizing the reconciliation and renewed faith in democracy. Okay, democracy ro faith upre 210 जन जॉइन कले. Rehabilitation carried out under the Bastar Police Pune Margam initiative. The program address extremism through integrated security, welfare and outreach effort. Police of the Chhattisgarh Naxal Surrender and Rehabilitation Policy 2025 offer financial support, education and employment opportunity to help Maoists integrate into the society. Strategic alignment, the initiative aligned with India's Samadhan counter insurgency doctrine, merging development with security measure for lasting peace. The Niti Aayog We Rise initiative, Niti Aayog We Rise initiative, Niti Aayog Women Entrepreneurship Platform, Women Entrepreneurship Platform and DP World launched the Women Enterprises Entrepreneurship Reimagining in exclusive, inclusive and sustainable enterprise initiative We Rise. We Rise. We माने Women Entrepreneurship, Rise माने reimaging in inclusive, sustainable enterprise initiative. Rise. Okay. Enterprise. We माने Women Enterprises. The initiative is part of the WEP's award to reward ATR, award to reward program. Key highlight करना, objective करना, enable women led micro, small and medium enterprises with growth potential to access global trade network and enhance export readiness. Enhance export readiness. Scale, initial support to make 100 women entrepreneurs export ready pro trade facilitation, mentorship and strategic partnership. Market access, selected entrepreneurs will get opportunity to showcase at Bharat Mart in Dubai's Jebel Ali Free Zone, Jafja, a B2B, B2C marketplace that connect Indian seller to global buyers. Ecosystem linkage started in 2018 and PPP from 2022. WP will use its network of 90,000 plus women entrepreneurs and 47 partners to find and help beneficiary. Clear guys? So नीति आयोग वी राइज इनिशिएटिव बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. देन ग्रीन क्राकर दिवाली उपरे लेस पॉल्यूटेंट. Eco modified firecracker developed by CSR NIRI to reduce emission of particular matter, toxic gases, noise level compared to the conventional firecracker. They aim to provide safer alternative that maintain festivity while minimizing pollution. Chemical component, they are formulated without barium nitrate, a major toxic component, and instead use safer substitute like potassium nitrate, strontium salt, zeolite and iron oxide. These additives help capture soot and reduce metallic residues such as aluminum and copper in emissions. How it works? The redesigned chemical composition enables controlled oxidation and reduced combustion temperature, producing light and sound with 30 to 40% lower PM 2.5, SO2 and NOx emission. The compound zeolite acts as an absorbent for dust and gaseous byproducts, limiting pollutant release. Global multi-dimensional, this is very also in use thila, global multi-dimensional property index. Global multi-dimensional property index. So United Nations Development Program UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative
रिलीज ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 सो किए रिलीज कले यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिपोर्ट टाइटल ओवरलैपिंग हार्डशिप पॉवर्टी एंड केमिकल क्लाइमेट hazards. MPI is a global measure for acute poverty that capture multiple deprivation, health, education, standard of living. Okay, beyond income poverty. So published by jointly produced by UNDP Human Development Report Office, UNDP Human Office, and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPSC) since 2010. Launched in the global MPI was first introduced in 2010 Human Development Report, covering over 100 developing countries. To assess who is poor, how they are poor, who is poor, how they are poor, and how poverty overlap with deprivation, thereby guiding evidence based on policy making aligned with SDG 1. SDG no poverty. So global poverty prevalence 2025 MPI covers 109 countries. से पाइला कि 1.1 billion people, यानी 88.3% of the life is acute multidimensional poverty, indicating persistent global deprivation despite post-pandemic recovery. Severity and poverty, nearly 43.6% poor people, about 501 million are in severe poverty. Okay, so meaning severe poverty माने they are deprived at least half of the MPI indicators. जो हाफ ऑफ द एमपीआई इंडिकेटर्स जा अछि तारो माने तांगु डिक्लाइन कराई छी या ताको डिप्राइव कराई छी, showing the depth of the deprivation in the vulnerable region. So then INS Vikrant, Prime Minister India celebrated Diwali with INS Indian Navy personnel on board INS Vikrant. So इथे थिले तो से न्यूज रे अच्छी इंडिया's first indigenous aircraft carrier and lauded armed forces for their valor and success in Operation Sindoor. India's first indigenous aircraft carrier, okay, INS Vikrant एटा मन रखिबो. So या विषय जे देखिबा INS Vikrant IAC-1 is a India's first indigenous built aircraft carrier, okay, symbolizing the nation's technological self-reliance and naval modernization under the Atmanirbhar Bharat initiative. Named after the historic INS Vikrant that served with distinction during 1971 Indo-Pakistan War, it embodies India's maritime legacy and strategic aspiration. So UNESCO Global Education Report, UNESCO Global Education Report. This is also very important one. UNESCO Global Education Report. So UNESCO Global Education Report reveals that 133 million girls worldwide remain out of the school despite 3 decades since the Beijing Declaration. About UNESCO Global Education Report 2025 Global Snapshot. The report tracks gender equality in education, showing major gains in enrollment but persistent gaps in access and quality. 91 million more girls attended primary school and 136 million more attended secondary school compared to 1995. Bodichi, regional parity. Central and South Asia have reached gender parity in the secondary education. Sub-Saharan Africa and Oceania continue to lag due to poverty, rural isolation and conflict. In countries like Mali, Guyana, fewer than 20% of the girls complete lower secondary education. Blue flag beach, ये भी न्यूज थिला. सो 5 बीचेस इन महाराष्ट्र, 5टा बीचेस इन महाराष्ट्र, गोटेला श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर एंड लाडघर ये 5टा हला कोन ना ब्लू बीच फ्लैग रो रिकॉग्निशन हला. इंटरनेशनल ब्लू बीच फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क, ये देला ब्लू फ्लैग बीचेस को ये रिकॉग्नाइज कर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलिला. कौन कौन? श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका एंड गुहागर एंड लाडघाट, ये सब 5टा. ये देखो
शिवराजपुर बीच गुजरात रा ये सब किसी ब्लू फ्लैग बीच गोल्डन बीच आम ओडिशा रे ऋषिकल्या बीच आंध्र प्रदेश रे ऋषिकंडा राधानगर बीच ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच सब देखि दियो ओके तमिलनाडु रे अछि सो ब्लू फ्लैग बीच कौन ना ये इको लेवल अवार्ड बीच जोटा कि इको लेवल अवार्ड टू द बीचेस marines and sustainable boating tourism operator that meet stringent standard of environment equality safety and management सेइथमे ब्लू फ्लैग so certification is granted by FE Foundation for Environmental Education Denmark रे अछि the international non profit organization working to promote sustainable environmental practices through education and certification India officially joined the blue flag program in 2018 इंडिया ब्लू फ्लैग स्टार्ट देखियो टोटल सर्टिफाइड बीचेस 13 प्लस 5 न्यू टोटल 18 बीचेस हे गला फ्लैग बीचेस अक्रॉस द इंडिया रिसेंट एडिशन देखो पांचटा बीचेस हला हम जेटा को कहले श्रीवर्धन नागांव पारनाका गुहागर एंड लाडगर लास्ट वन सोर प्रोग्राम लास्ट वन और टू सोर प्रोग्राम ये काहे की न्यूज रे अछि सोर प्रोग्राम गवर्नमेंट इनिशिएटिव द स्किल फॉर एआई रेडीनेस एआई पई रेडी करे पई सरकार स्टार्ट करछि सोर ये इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनटू स्कूल करिकुलम रे एटा को इंक्लूड करा जिवो बोली सोर SOAR सो बेसिकली एमिति सोर एमिति हेइ छि देखो SOAI ओके आर रो पार्टा So basically AI readiness कराजियो a flagship initiative under Skill India mission जोंटे कि AI literacy को strengthen करिवो competency को strengthen करिवो student class 6 to 12 and educator the program include structured AI module hands on learning ethics based training to prepare India's youth for AI driven career implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in coordination with the Ministry of Education So create AI awareness among the school student, educators bhitre, and to equip youth industry relevant AI skill for self-reliant under Atmanirbhar Bharat to bridge the digital skill gap between urban and rural case. Last one 23 for 23 initiative. India celebrated International Snow Leopard Day October 23, 2025 with nationwide कौन ना 23 for 23 कैंपेन 23 for 23 माने 23 मिनट for snow leopard 23 अक्टूबर 23 रहेला a global digital campaign the initiative invite individual institution and community worldwide to dedicate 23 minutes of the physical activity such as walking running and cycling and yoga and stretching to honor the snow leopard the ultimate mountain athlete so 23 minutes physical activity mein so it is very important hey pare question so government unveiled the first ever national snow leopard census recording 718 individual across the Indian Himalaya the national awareness campaign launched by the Ministry of Environment and Forest Climate Change to engage citizens in snow leopard conservation through community driven participation awareness create kariba yanko through re key finding of snow leopard census in India total count jo dekhibo 718 individual Himalayan landscape marking the first official nationwide estimated thila so या परे क्वेश्चन देखिबा सो स्नो लेपर्ड कथा देखिले सो एवरी डे हमें एवरी वीक रे हमें ई बलिया सॉल्व करिया और किछि क्वेश्चंस हमें करिवा consider following statement about British Academic Prize it is open to basically fiction as well as non fiction the author can be any nationally or a book must be published in the UK for the first time within the eligibility period self published book are eligible self-published books are eligible. Which of the following are more correct? Only two it are correct. ये only non-fiction, not fiction. So it भी भूलेला. Any national behavior but book must be published in UK
and the first time within the eligibility period. 2. With reference to the recent sighting of the Indian scoop whale near Daroji Sanctuary, consider the following statement. The Indian scoop whale is a migratory species found only in India. This sighting is significant for highlighting the region's diversity and need for our habitat conservation. The whale is primarily insectivorous and has been listed by least concern by IUCN. So, ये सब statement रो which one is the correct one? Which one is the correct one? So, basically 2 and 3. 2 and 3 are the correct one. A. Which of the following is a repulsion period system? Which of the following is a repulsion period system? 4 General Electric gas turbine. 4 General Electric gas turbine. C. Which of the following repulsive? With reference to the 23 for 23 initiative, consider the following statement. एबे आमे देखिले 23 for 23 मिनिट ये पई दबा स्नो लियोपार्ड पई. सो क्वेश्चन सला यदि कैंपेन एनकरेज सिटीजन टू डेडिकेट 23 मिनिट फॉर फिजिकल एक्टिविटी स्नो लियोपार्ड पई launched on the occasion of International Leopard Day. Yes, the campaign is conducted under Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program. D. Correct. Okay, so with reference to blue flag certification, which of the following are statement? Blue flag will possibly support all the 17 sustainable. Maharashtra has highest number of blue flag beaches in India. Foundation of Environmental Education managing blue flag is recognized by UNESCO. So, pratham ta blue flag 17 ये and 3 1 and 3. B is the correct answer. There is no blue flag certification beaches found in Maharashtra. The blue flag program run by Copenhagen, Denmark Foundation and Environment and Education, not a non-profit organizations. So ये तुम्हें देखी थी वो. So ये थिला तुम्हारा क्वेश्चंस ए पार्ट रे. So I hope समस्ते एंजॉय करथिबो. एवरी वीक रे आसीबो. समस्ते लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु. सो सोशियोलॉजी ऑप्शन रो मेंटरशिप एंड सोशियोलॉजी रो फाउंडेशन बैच एटाला मेंटरशिप एटाला फाउंडेशन बैच समस्ते जॉइन करंतु. फाउंडेशन रे मात्र गोटे यूनिट सरी गलानी नाही. सो आपण जल्दी जल्दी जॉइन करंतु. आपण को वेरी गुड नॉलेज पाइबे सोशियोलॉजी ऑप्शनल लो. एवं मेंटरशिप भी आपण जो माने थोड़े पढ़ी सारी तांको पई भी ये बेस्ट सुइटेबल रहिबो. देन ओसीएस रो मेंस रो टेस्ट सीरीज एंड मेंस रो मेंटरशिप मध्ये जॉइन करी. टेस्ट सीरीज केवल 25 टा टेस्ट रहिबो. इवैल्यूएशन एंड मॉडल आंसर रहिबो एंड मेंटरशिप सहित रहिले ये तुमर एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलिबो जोटा कि बहुत कॉम्बो नेले आपण 1000 डिस्काउंट पाई परिबे. मेंटरशिप रे आपण क्वेश्चंस ओरिएंटेड डिस्कशन हबो. सो ये आपनकर रहिबो. समस्ते ये करंतु. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय जगन्नाथ. नमस्कार.